हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस मीनॉन। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 अर्ली ह्यूमंस माय ग्रीन वर्ड क्लास 3। तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। कैन यू थिंक ऑफ अ लाइफ where there is no house to live in, no cooked food to eat, and no fashionable clothes to wear? We are talking about here about the life of early humans. It is हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस मीडॉन। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 अर्ली ह्यूमंस माय ग्रीन वर्ल्ड क्लास 3। तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। कैन यू थिंक ऑफ अ लाइफ वेयर इज नो हाउस टू लिव इन, नो गुड फूड टू ईट, एंड नो फैशनेबल clothes to wear? We are talking here about the life of early humans. It was the beginning of human life on earth when they lived in forests and caves. तो यहाँ बात हो रही है अर्ली ह्यूमंस की, जब कोई हाउसेज नहीं होते थे, जब कोई कुक्ड फूड नहीं होता था, ना कोई फैशनेबल क्लोथ्स। तो उस वक्त ये लोग केव्स में और फॉरेस्ट में रहते थे। तो हम अभी पढ़ेंगे उनके फूड के बारे में। तो early humans used to live in groups in jungle. They did not know how to grow crops in fields, and finding food was not easy. They used to go from place to place in search of food. In beginning, humans used to eat fruits or roots of plants. मतलब पहले वो फ्रूट्स खाते थे और रूट्स खाते थे प्लांट्स के। Later they started hunting animals for food, but they could not kill large animals with their bare hands. So they started using sharp edge stone. अपने खाली हाथों से थोड़ी कर पाएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को हंट करना, पर वो अपने हाथों से तो बड़े बड़े एनिमल्स को हंट नहीं कर पाते। तो उन्होंने स्टोन से शुरू करा हंट करना। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया टूल्स बना के उनसे हंट करना, स्टोन के टूल से। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ बिग इवेंट इन लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। दे डिस्कवर्ड फायर बाय एक्सीडेंट। दे फाउंड दैट when two stones are rubbed vigorously, there occurs a spark of fire. Later they found that grass catches fire while stone do not. Slowly they learned how to cook and use fire to cook meat, and some plants they also used fire to keep warm in winter, light up their caves, and scare away animals. Clothing. They do think early humans. Why do you think early humans wore clothes? They sew to cover their bodies in order to protect themselves against heat, cold, and rain. मतलब वो heat, cold और rain से बचने के लिए करते थे. They used animal skin, fur, and leaves of plants as clothes. मतलब वो इन सब का यूज़ करके क्लोथ्स को यूज़ करते थे। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस. दे लिव्ड इन फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्श वेदर कंडीशन एंड एनिमल अटैक्स। मतलब वो विलेजेस में कुछ था नहीं, विलेजेस में कोई हाउसेस नहीं थे, विलेजेस ही नहीं होते थे। तो वो पहले केव्स में रहते थे या फिर उसमें रहते थे फॉरेस्ट में। They used hides and animal skin for covering the entrance of cave in winter. मतलब वो केव की एंट्रेंस को भी कवर कर देते थे। फिर improving lifestyles. Early humans lived in small groups and moved from place to place in search of food. They used to hunt in groups. They did not live in settlements or villages. Subsequently, they learned to make mud houses. They gave rise to small villages which were protected by mud fences. Discovery of fire led to making of baked pots and beds which were used as cookware and to make ornaments. With agriculture, early humans also started raising animals like goat and sheep for meat and
wool. They also kept cats and dogs as pets for protection. Later, cattle were also raised by them for milk and meat. They provided them with plenty of food choices. All of these improved the quality of life. All of these things improved the quality of life of early humans. Their small but important invention led man on path of growing and development. Over a period of time, man became more cultured and social. अब आती है exercises. Early humans used to dash the animal for food, hunt. Discovery of fire was a major step in life of early humans. Fire tools helped early humans in hunting animals, cooking food, making fire, eating food. Hunting animals. Which of the following were part of an early humans life? तो जो बहुत अच्छे पार्ट थे वो सारे यही थे. All of these. Man started living in settlements after he started living in settlements after they started making clothes. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हरे कृष्णा.